Now we start the question number 9 of valuation of long-term securities, chapter number 4 of the financial management book of James Van Horn. Before starting the question, do remember to subscribe my channel. मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें, आपको इस पे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बाकी डिफरेंट और भी सब्जेक्ट्स की जैसे कि अकाउंटिंग हो गया और दीगर भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड हाउ टू गेट अ गुड CGPA, इस तरह की जनरल इंफॉर्मेशन जो है जनरल एकेडमिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस भी जो हैं वो इस चैनल पे आती रहेंगी, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल. Question number 9. Question number 9 is basically about it is about the valuation of the bond. It is about the valuation of the bond, that what should be the value of the bond. Remember, there are three types of the bond. The type 1 bond is zero coupon bond, on which there is no coupon rate, there is no interest rate, and then there are then there is finite maturity bond with some coupon rate. और इस क्वेश्चन में यही वाला जो है यही वाला बॉन्ड है जिसकी एक स्पेसिफिक लाइफ है. And the third is perpetual bond. It is the bond that has unlimited life. We will discuss the questions related with those bonds, but here in this question, the question is about a finite maturity non-zero coupon bond. Finite maturity non-zero coupon bond. So there are three types. Type number 1 is perpetual bond. It is a bond that pays you the interest forever. There is no limit, हमेशा वो पे करता रहेगा. Then there is zero coupon bond. Zero coupon bond is a bond on which there is no stated interest rate. The bond is basically issued at a discounted value. अगर 100 रुपये का बॉन्ड है तो आपको फॉर एग्जांपल 90 रुपये का इशू किया जाएगा, बेचा जाएगा और मेच्योरिटी पे आपसे वापस 100 रुपये का ख़रीद लिया जाएगा, और वो जो 10 रुपये का डिफरेंस होगा वो बेसिकली आपका इंटरेस्ट रेट होगा, आपका रिटर्न होगा. और जो थर्ड टाइप है बॉन्ड की वो है फाइनाइट मेच्योरिटी नॉन ज़ीरो कूपन बॉन्ड, यानी कि उसकी मेच्योरिटी जो है वो फाइनाइट होगी और उसका कूपन जो है वो नॉन ज़ीरो होगा, ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो के अलावा होगा, मतलब 1 2 3 5. रिमेंबर, कूपन रेट जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकता. कूपन रेट रिटर्न है बॉन्ड का एंड रिटर्न इज़ ऑलवेज इन पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी इन नेगेटिव. Now I read out the question, that what is written in the question, and we will write the data accordingly. A 9% a 9% coupon rate bonds of the Melbourne Mining Company have exactly 15 years remaining to maturity. So the coupon rate is 9% and is the number of years, that is 15. The current market value of one of these 1000 par value bonds is 700. मैंने आपको पहले भी बताया है कि पार वैल्यू और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस होता है. पार वैल्यू का पर्पस इन क्वेश्चंस में सिर्फ एक होता है कि विद द हेल्प ऑफ द पार वैल्यू यू कैन calculate the interest amount. The interest is always calculated at par value. हमेशा पार वैल्यू के साथ इंटरेस्ट रेट को आपने मल्टीप्लाई करना है और इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है जो बॉन्ड आपको पे करेगा. अगर आपने इंटरेस्ट रेट को मल्टीप्लाई किया उसकी मार्केट वैल्यू के साथ या इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा. आपने हमेशा इंटरेस्ट रेट को पार वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है. और इन क्वेश्चंस में दो यूजेस हैं. एक यूज़ तो ये है कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, और दूसरा फिर वही जो पार वैल्यू होती है वही एट मेच्योरिटी वही आपको वैल्यू जो है वो वापस
मिल जाती है। अच्छा जी, हम बाकी वी रीड आउट द रिमेनिंग डेटा ऑफ द क्वेश्चन। द करंट मार्केट वैल्यू ये हो गया है। द इंटरेस्ट इज पेड सेमी एनुअली। इंटरेस्ट जो भी इस बॉन्ड का है यानी कि 9% कूपन रेट है, और जितना भी इंटरेस्ट बनता है 1 साल का वो सेमी एनुअली पे किया जाएगा। आधा 6 महीने बाद दिया जाएगा और बाकी आधा फिर 6 महीने बाद दिया जाएगा। इंटरेस्ट पेमेंट सेमी एनुअल है। अभी तक यहाँ पे कंपाउंडिंग या डिस्काउंटिंग की कोई बात नहीं हुई, इंटरेस्ट पेमेंट की बात हुई है। कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग जो है वो अलग चीज़ है, वो आगे चल के अभी बात होगी। देन ही सेज दैट an investor, that is Gibson, places a nominal annual required rate of return of 14% on these bonds. So KD, required rate of return, KD is equal to 14%. फिर बता रहा हूँ आपको, required rate of return in case of the preferred stock is written as KP, required rate of return in case of common stock is written as KE, and the required rate of return in case of bond is written as KD, 14% or 0.14. And then he also guides us that there is semi-annual discounting. So value of M is 2, as in chapter number 3 whenever the compounding or discounting was on other than annual basis, the value of M was either 2 for semi-annual, 4 for quarterly, 12 for monthly, and so on. Now he has asked to calculate the intrinsic value of the bond. इस वक्त बॉन्ड मार्केट में 700 का बिक रहा है, लेकिन वो होना कितने का चाहिए, वो कितने का होना चाहिए। जब कंपनी ने बेचा तो वो उसने उस वक्त उसकी पार वैल्यू जो थी वो $1000 थी, तो उसने पार वैल्यू पे बेचा। अब मार्केट में 700 का बिक रहा है, इसकी वैल्यू होनी कितनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंडामेंटल्स। So we start to solve the question. The formula is V is equal to I over 2. I is the interest rate. I over 2 multiplied by 1 minus 1 over 1 plus KD over M. KD is the required rate of return. M is the number of discounting. N is the number of year multiplied by M is the number of discounting plus MV. MV is the maturity value. It is the value that you will get at the end of the 15 years, and this maturity value is always the par value or face value. Par value is also called the face value. The maturity value is basically the par value. At maturity you will get exactly 1000. जो पार वैल्यू होती है वही आपको मेच्योरिटी पे वापस मिल जाती है। Formula of intrinsic value of non-zero coupon final maturity bond. It is basically not final, it is finite. So now we put the values in the formula. First of all, we will calculate the interest, that how much is the interest on this bond. For a calculation of the interest, we multiply the coupon rate with the par value. So 9% is multiplied with 1000 and we get the interest of $90. As we know that the interest payment is semi-annual, so we divide interest, so that's why we divide interest with 2. We will put the values in the formula. We will put the values in formula, and 90 divided by 2, and 14 is the required rate of return, 2 is the number of discountings, and n is the 15 number of years, and this is the 1000 maturity value. That is all, that is basically the face value, but we do not write it as face value, we call it maturity value.
and the remaining things of the formula, and the answer is 689. So the price of this bond should be 689, approximately $690 should be the price of this bond, whereas it is being traded in the market at 700. It means that it is overvalued. जितने का ये मार्केट में ख़रीदा या बेचा जाना चाहिए उससे ज़्यादा कीमत पे ये मार्केट में ख़रीदा या बेचा जा रहा है. Remember, the formula of the non-zero finite maturity bond is very similar to the formula of callable preferred stock, to the formula of callable preferred stock in question number 7. Only the difference is of notations. Here the things are a little bit different, but the nature of the formula is basically the same, so it will help you to easily memorize the formula. We are done with the question number 9, and in next video we will move to the question number 10. Do not forget to subscribe my channel.